सर, प्राकृतिक आपदाएं तो कई प्रकार की होती हैं। हाँ आप कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानते हैं, ये बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। साहब, तो वैसे हफ्ता की बात करें तो ये अभी ये परसों के दिन में कितना खतरनाक आंधी और तूफान ये कितने हुआ है। दूसरी आपदा ये पानी सुनामी के जो ले रहे हैं, ये आपदा। तीसरी आपदा का अकाल पड़ जाए, जमीन सूख जाए। अब सही वैसे कितने तो वो ऐसा कुछ वो होता है। सर का ये सवाल है आपसे हाँ कि कौन कौन सी आपदाएं हैं, हाँ ये बताओ आप। हाँ अब मैं बताता हूँ तुम्हें। हाँ भूकंप हो गया, हाँ सुनामी हो गई, हाँ और जमीन फट जाना हुई, हाँ करंट फैल जाना हुआ, हाँ ये तो सारी आपदाएं आती हैं। हाँ। अब क्या बोला, देखो अब वो क्या जो जमीन पे पड़े वो भूकंप तो उसे कहते हैं। अब करंट फैला, ये कोई आपदा नहीं है। अच्छा ये अच्छा। अपने हाथ की बनी हुई है, तो इसको आपदा ठीक है सर, आप बहस मत करिए। हाँ आज जो हमारा वीडियो है हाँ वो इसी टॉपिक पर है हाँ कि जितनी भी प्राकृतिक आपदा है हाँ अच्छा, वो आपको बताने वाले हैं। ओह, अच्छा, जितनी भी प्रकार की, क्या बिल्कुल बात है बिल्कुल यार। उसमें से बहुत सौ के बारे में तो आपने सुना होगा और हाँ शायद बहुत सौ के बारे में नहीं भी सुना होगा। सही बात है नहीं। सही है। तो मैं चाहता हूँ आप इसे देखें, समझे और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। अब सही बात है, क्या साहब कि ये आपदा जो है, ये सुन के साहब आप यकीन मानो, ये हमारे से रूह कांपती है साहब। यकीनन यकीनन। हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो, किसी की जान जाए, किसी की पैसे नहीं बढ़े, लेकिन अब मालिक की तरफ से वो चीज़ अगर है और वो आना है तो साहब उसको कोई रोक भी नहीं सकता। कोई नहीं हो सकता। सही, आपदा तो आनी ही नहीं चाहिए, नुकसान के सिवा कुछ नहीं होता है। बस सही, बस हमारा इतना से कहना है। लगाइए सर। लगाइए। Earthquake. Earthquakes are mainly caused by the movement of the tectonic Acha. plates, either because they grind against each other or because they move away, which is why they're much more common in places near the edges of tectonic plates. About Acha. 90% of the world's earthquakes, including the biggest ones, happen in the Ring of Fire, which is a tectonic belt that contains countries like Acha. Japan, New Zealand, and Indonesia. और तरीके से अब पता चला भी है कि वाकई इन देशों में ज्यादा करके भूकंप जो आते हैं ना, वो इसी कारण से आते हैं यार। बाबू, मेरे को तो आज पता चला कि जमीन के नीचे प्लेटें हैं, वो हिलती हैं तो भूकंप हो जाता है, हाँ टकरा यार, जाती हैं आपस में। तो ये कौन सा चक्कर है यार। अब मैं तो कहीं 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 होता है कि जो जमीन पे जब भूकंप आने का है, वो शायद पानी की कमी है या कहीं जमीन सूख जाती है, उससे भूकंप आता है। लेकिन आज पता चला कि कोई प्लेटें हैं जो हाँ यार, हिलती जुलती। प्लेटें कहाँ से आ गई हाँ यार। यार। Earthquake's intensity is measured using seismic magnitude scales, with the most intense Acha. earthquake Acha. ever being the Great Chilean Earthquake in 1960, which reached a Oh, magnitude of oh, 9.5. baap. The deadliest earthquake ever, however, was the 1556 Shanxi earthquake, which killed more than 830,000 people. यार, 8,30,000 लोगों की जान तो चल गई। बड़ा दुख की बात है भैया। यानी पूरा एक शहर खत्म हो गया हाँ यार, लगभग। बिल्कुल हैं? देखा जाए तो वो भी 1500 के दशक में देखो इतना आबादी ये कम थी यार, अरे उसमें इतनी जान जी चल यानी गई। दुनिया का कितना हाँ खत्म, यार। एक हिस्सा खत्म हो गया लगभग, ठीक है। There are also many types of earthquakes, such as the megathrust earthquake, which happens when one tectonic plate is forced underneath another, and which is the same type of earthquake as the 10 largest ones recorded. It's important to point out that an earthquake is the most likely natural disaster to trigger other natural disasters, especially tsunamis, landslides, volcanic eruptions, and floods. अच्छा अच्छा अच्छा। बाबू, यानी एक भूकंप की वजह से 3-4 चीजें आ जाती हैं पीछे पीछे लगे यार। बताओ आप हाँ यार, यार, इतना बड़ा नुकसान है यार ये। बहुत बड़ा नुकसान है। Volcanic eruptions. A volcano is simply a rupture in the crust of Earth that allows lava, volcanic ash, and gases to escape from a magma chamber below the surface. They are mostly found on tectonic plate edges, and because most of Earth's plate boundaries are underwater, most volcanoes are found underwater. It's also why the Ring of Fire contains between 750 and 915 active or dormant volcanoes, which is around 2/3 of the world total. If a large eruption happened, it would affect atmospheric temperature as ash and droplets of sulfuric acid obscure the sun and cool Earth, causing a volcanic winter. There are many types of volcanoes, but the most feared one is the supervolcano, which is a volcano that has experienced one or more eruptions that produced huge amounts of volcanic deposits. The most famous active supervolcano is the Yellowstone caldera in the US. सॉकरी अरे बाप रे बाप यार, ये तो बस रिस्की है यार, कि इसका कोई भरोसा कर लेना, जो कब क्या जब वो
उगल सकता है ये तो भैया यार। हाँ यार, Fortunately, their eruptions are really rare, as only Acha. 4 are currently known from the last million years. But if one Acha. were to happen, it would cause incredible Ah. damage. The deadliest Ore eruption baap re was the baap. 1815 Mount Tabora eruption in Indonesia, Oh, with a oh, death oh. toll between 71,000 and 250,000 people. Oh, It was so bad that it created global climate changes, causing the year 1816 to be Acha. called the year without a summer. बाबू भाई कितना खतरनाक होगा कि दुनिया में ठंड पड़ गई इसके वजह से, बताओ आप यार। In the northern hemisphere, livestock died and crops failed, resulting in the worst famine of the ओए century. बाप रे बाप। Hail. Hail happens when ice balls fall from the sky. They're created when strong winds in a storm सब ये बोले तो हमारे भी गिरते क्योंकि हमने वो लोग को देखा सही। और बाबू भाई अपने वहाँ तो बड़े बूढ़े क्या उसको ओलों को जमा करके हाँ। रखते हैं कि उसका पानी बहुत फायदेमंद है क्या नहीं? lift raindrops high into the sky where it is very cold, making the drops freeze into ice balls. As they get blown around, more ice layers build up on them, making them bigger until they become too heavy and they fall to the ground as hailstones. They are not the same as ice pellets or graupel. For example, ice pellets generally fall in cold weather, while hail growth is greatly inhibited during low surface temperatures. Hail is most common during thunderstorms. बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि ये बोले जब भी गिरते ना गलत के बारिश में गिरते हैं आम बारिश में उसमें नहीं गिरते, लेकिन जब गर्मी में और इसमें जब गिरते ना बाकी में ये बिल्कुल बात सही कह रहे हो आप। अच्छा हमारे क्या ज़्यादा 1 इंची बस इससे बड़े ओले नहीं गिरते, बस 1 इंची तक इतने बड़े नहीं गिरते। And in places like the Hail Alley in the US. Also, when you cut a hailstone in half, you can often see layers like those in an onion. These layers show how many times the hailstone was lifted and fell inside the storm cloud. The worst disasters caused by hailstorms happened in Germany and Australia, with damages of around $2 billion. बाप रे बाप। बाबू भाई मेरे को कोई बता रहा था कि ईंट रहती नहीं उसके आधा कर लो, इतने बड़े ओले गिरते हैं जब इतना नुकसान हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल यार ठीक है नहीं? सही बात। Landslide. Landslides are powerful and often sudden movements of large amounts of rock, soil, and debris down a slope, and they can happen everywhere, even though they're more likely in areas with steep slopes, loose soil, or where there has been a lot of rain. बाबू भाई अपने वहाँ हिमालय के गोद में बसा हुआ मनाली है कि नहीं, छोटा सा गाँव, वहाँ के गाइड ने बताया था ये चक्कर कि बारिश के दिनों में ये खसकने लग जाते हैं जब ऐसे भूस्खलन होता है। पहाड़ गिरते हैं पहाड़। हाँ। Big landslides, if they hit water, can generate tsunamis or even mega-tsunamis. The deadliest landslide in history happened in China, where an earthquake initiated 675 big landslides that killed 200,000 people. Hurricane. A hurricane is a rapidly rotating storm system, continuously rotating around a low pressure center, which causes stormy weather across a large area. ये सब ये कहने ये हमारे नहीं आते था, हमारे का शुक्र है। हाँ वो जो अपने तूफान आंधी बर्फ भूस्खलन जो बचा वो हमारे जो बाकी ये चीज हमारे नहीं आती, ये शुक्र है मालिक का। They are not to be confused with tornadoes, even though both of them are types of cyclones. To be considered hurricanes, they need to achieve the target of 1 minute maximum sustained winds of 75 miles per hour or more. An interesting thing about them is that they actually form over warm ocean waters, usually when sea surface temperatures are at least 80 degrees Fahrenheit. One of the deadliest hurricanes in U.S. history is Hurricane Katrina, which struck the Gulf Coast, particularly New Orleans in 2005, causing over 1,800 deaths and $125 billion in damage. अभी भी बजे 2005 में हुआ है, देख लो यार। मैं इसको बवंडर समझ गया, लेकिन उसमें ये बताया कि बवंडर अलग हरिकेन अलग। बाबू भाई बवंडर शायद क्या जमीनों पाते हैं, ये क्या हरिकेन के समंदर चालू होता था। हाँ यार। Cold wave. A cold wave is a rapid fall in temperature within a 24-hour period that requires increased protection for agriculture, industry, commerce, and people. It poses a danger not only to people through frostbite and hypothermia, but also to livestock and crops. And if a cold wave is accompanied by heavy and persistent snow, grazing animals may be unable to reach needed food and die of hypothermia or starvation. बाबू अपना जो ठंडे इलाके हिमालय वाले वहाँ देखने को मिलती है चीज, तो क्या है क्या नहीं? अच्छा अगर हमारे तो चेतावनी भी आती है, जो दिसंबर का महीना होता है, जनवरी का महीना होता है ना, उसमें चेतावनी भी देते हैं कि कोट पहन के बाहर निकलना, इतने मत निकलना। पहले
टाइम टाइम पे जैसा माहौल देखते हैं उस हिसाब से वो सूचना आप पे कर देते हैं। They can also cause damage, causing poorly insulated water pipelines and mains to freeze. The population usually requires more fuel and energy during this time, even though the generation of electrical power may fail due to the freezing of water necessary for the generation of hydroelectricity. The body also needs more energy, as exposure to cold increases the need for greater caloric intake for everyone. Counterintuitively, fires become even more of a hazard during extreme cold. इधर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये इतनी सर्दी कह रहे हमारे यहाँ जो इलाके हैं वहाँ तो नहीं पड़ती, लेकिन हाँ जो उधर ठंडे इलाके हैं जैसे कश्मीर है और जो ठंडे इलाके वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है। वो इतना लंबा छोड़ोगे तो ये ऐसा कह दो ना कि हिमालय पर्वत के जो इलाके होंगे break and water supplies may become unreliable, making firefighting more difficult. Also, the air during a cold wave is typically denser and thus contains more oxygen. So when the air that a fire draws in becomes unusually cold, it is likely to cause a more intense fire. One of the only things in cold waves that can help stop fires is snow. Avalanche. यार ये शीतलहर थी ना सर्वसाधारण नियम है, चलो आप इसको अपने को हल्के में नहीं लेना, ये भी आज मौका जब फेमस है ना तो ये बहुत ज्यादा। There are two main types of avalanches. Slab avalanches, which are made of tightly packed snow and triggered by the collapse of an underlying weak snow layer, and loose snow avalanches, which are made of looser snow. After being set off, avalanches usually accelerate rapidly and grow as they capture more snow, in what's called the snowball effect. They can be triggered either by natural causes or by human activities like skiing, snowmobiles, etc. Even though, contrary to popular belief, they can't be triggered by loud sounds. The worst avalanche ever happened in 1970 in Peru, when an earthquake caused an avalanche so big that it destroyed the city of Yungay and 10 nearby villages, causing 30,000 deaths. भाई आपने सुना होगा कि चाइना और हिमालय पहाड़ की उसमें बॉर्डर है अपनी, तो अपने सैनिक पेरा देते हैं कि नहीं कारगिल वाले, तो वहाँ पे ऐसे तूफान आते होंगे नहीं तो कई बार वो दब के वो शहीद हो जाते हैं अपने सैनिक यार बेचारे ऐसे तूफान में। Heat wave. A heat wave is a prolonged period of excessively hot weather that usually lasts days or weeks and is usually accompanied by high humidity levels. They form when a high-pressure area in the atmosphere remains over an area for a prolonged period of time, trapping heat near the Earth's surface. They have high impacts on the economy, especially the agricultural sector. जिसको आप मतलब ये तो भी हमारे यहाँ चल रही है और अभी कंडीशन ये है कि धीरे डिग्री तक ये पहुंच चुका है और जो रेतीले इलाके वहाँ 45 से 46 तक भी पहुंच चुका है। बाबू अपने में तो सरकार की तरफ से मैसेज रही रहे हैं, पीली वार्निंग आ गई, लाल वार्निंग आ गई कि 12 से 4 के बीच में बाहर मत निकलना, दिक्कत हो रहेगी जरा से। Causing crop failures. People can die from hyperthermia. The risk of wildfires is increased in areas with drought, and they can even lead to widespread electricity outages because more air conditioning is used. One of the deadliest heat waves in recent history happened in 2003 with the European heat wave, which caused an estimated 70,000 deaths. बाप रे बाप यार यूरोप से अलग सबसे राजा अब ज्यादा मैंने तो सुना है कि वो सर्दी के उनको आ गए थे, अब वो सर्दी में एकदम गर्मी पड़े तो शायद उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये कारण है मेन तो। Tornado. There are different types of tornadoes, like the multiple vortex tornado, which has 2 or more vortexes rotating about their own axis. And at the same time, revolve around a common center. Most tornadoes have wind speeds less than 110 miles per hour, are about 250 feet across, and travel a few miles before dissipating. The most extreme tornadoes, however, have wind speeds of more than 300 miles per hour, are more than 2 miles in diameter, and stay on the ground for more than 62 miles. The most known rating system for tornadoes is the enhanced Fujita scale, where an EF0 tornado is only capable of damaging trees, while an EF5 rips buildings off their foundations and can deform large skyscrapers. Tornadoes often develop from a type of thunderstorm known as supercells, which contain a rotating area up in the atmosphere. A tornado begins when increasing rainfall drags with it an area of quickly descending air known as the rear flank downdraft, which accelerates as it approaches the ground. The country with the most tornadoes is the United States. बाकी में सब सही बात है कि जिस हिसाब से मतलब ये चीज़ तो कभी हमारे यहाँ देखने को कभी नसीब नहीं हुई है और हमारी मर्जी से यही प्रार्थना है कि ऐसी चीज़ हमारे यहाँ वो भेजे भी नहीं।
ये हमारी मैंने प्रार्थना। बाबू भाई आप ये सोचो खाली हाँ कि 300 मील प्रति घंटे के रफ्तार से हवा घूम रही है, हाँ। तो इंसान का लग रहा है बिल्डिंगों को उड़ा के ले जाएगी साले हो तो यार। बिल्कुल ले जाएगी, बिल्कुल ले जाएगी भैया यार। क्या भयंकर बर्पा हुआ केर उन्हें यार। With an average of 1,200 tornadoes, especially the central वो eastern part of वाह, it, known as the Tornado Alley. The deadliest tornado in the U.S. happened in 1925, when the tri-state tornado traveled through Missouri, Illinois, and Indiana, killing at least 751 people and causing extensive damage over 219 miles. Flooding. Human changes like deforestation, the removal of wetlands, changes in the waterway course, or flood controls might end up causing more floods if not planned properly. अच्छा ये बाढ़ का जब दो रीजन मुझे एक तो जो गुजरात की बाढ़ आ रही वो तो है जी, दूसरा जो इंसान उसके ये इसके साथ में जो प्रकृति सब जो खिलवाड़ कर दिया उसका भी ये परिणाम है, इसलिए वो दो रीजन बचा दिया। Climate change also plays a huge role in this type of natural disaster, as sea levels rise and most coastal cities like Venice disappear. Rivers have the advantages of having fertile land around them and providing easy travel and commerce routes, which is why many cultures have historically lived near them and still do. But the other side of the coin is the danger of floods. Another threat that needs to be remembered is the increased spread of waterborne diseases, such as cholera, hepatitis A, and hepatitis E. ये बात बिल्कुल सही है कि बाढ़ जो है आगे जो आ गई जितना निपटा दिया उसके उतरने के बाद जब ये बीमारियां जो फैलती है ना ये बहुत ज्यादा नुकसान देती है। The spread doesn't only happen when people directly touch the water, but also because of a lack of clean water during a flood, since most water supplies are contaminated when flooding occurs. Respiratory diseases also increase, since flooding can cause chronically wet houses, leading to the growth of indoor mold. अब क्या मैं तो खुद ही बगैर रहा हूँ, मेरा क्या मिट्टी का कच्चा मकान है, बरसात में सीधा आ जाती उसी में सोना पड़ता है और उसके ठंडक से मेरे को सांस शुरू हो जाती है मेरी। अब ये बात बच रही ना आपको कम से कम 5 साल पहले अब तो माले का जगह थोड़ा बहुत हमने कर लिया है और शीत की प्रोग्राम कर ली, ये तो आए दिन ये रोना शीत आई मेरे को साल की बीमारी। The worst floods happened in 1931, with the China floods causing between 2 and 4 million deaths, most of them caused by long-term effects of the floods, like the lack of food. A cholera epidemic happened in the subsequent year, causing around another 32,000 deaths. हर पृथ्वी का आपदा का जो एक मंजर बाकी का बहुत ही खतरनाक है, ना तो आप किसी को ज्यादा बोल सकते हैं ना किसी को कम बोल सकते हैं, ये बात सही है। सबका प्रभाव खतरनाक ही है। बिल्कुल है, आपदा ने फिर आपदा तो खतरनाक ही होती है सही। Wildfire. Some natural forest ecosystems actually depend on wildfires, mainly for cleaning dead trees and bushes, and at the same time, allowing for new growth. To avoid wildfires that would be too big, we sometimes do prescribed burns, which help to keep the situation under control. ये वो बचारे जो अपना ज्यादा नहीं कटाई हुई किसानों को जो आग लगा देते हैं वो भूसा बच जाता है, जलाते हैं। ये वो बच रही है। सही बाबू भाई वो ये भी बता रहेंगे कि उसको कंट्रोल करके जलाना पड़ती है, जब आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं रखा, कंट्रोल नहीं करा, जरा से में फैल जाएगी। Also, wildfires usually start in regions that have climatic cycles with wet periods that create substantial fuels, followed by drought and heat, which is why they are most common in places like California, Siberia, British Columbia, and Australia. There are 4 types of fire spreading: ground, crawling, ladder, and crown. Ground fires are fed by underground roots, duff on the forest floor, and other buried organic matter. Crawling fires are fueled by low-lying vegetation on the forest floor, such as leaf and timber litter, debris, grass, etc. Ladder fires consume material between low-level vegetation and tree canopies, such as small trees, downed logs, and vines. And lastly, crown fires burn suspended material at the canopy level, such as tall trees, vines, and mosses. आग भी जो होती है वो कितने तरह की होती है, और जब यहाँ ऐसी लगी वैसे ना आग के भी कितने रूप में यार। पहली बार पता चली आपने? हाँ पहली बार मालूम पड़ी आपने मुझे। An interesting thing is that wildfires can form pyrocumulonimbus clouds, which is a type of cloud that forms over sources of heat and might help extinguish the same fire that formed it. The deadliest wildfire happened in 1871, when the Peshtigo fire burned 1.2 million acres and killed between 1,500 and 2,500 people. Tsunami. While normal waves are caused by the wind or by tides, a tsunami is generated by the displacement of water from a large event, like earthquakes, landslides,
volcanic eruptions, etc. अच्छा, ये सब कारण है भैया सुनामी आने के। Tsunamis in the deep ocean have a much larger wavelength of up to 120 miles and can travel well over 500 miles per hour, which is as fast as an average commercial jet. बाप रे, बाबू प्लेन कितनी रफ्तार से उड़ता है, उसके रफ्तार से वो उड़ गया वो, ठीक है नहीं? अबे उड़ने दे आगे, हाँ, तूफान आगे बढ़िया है। जिस रफ्तार से प्लेन उड़ता है उसी रफ्तार से आगे बढ़िया। आगे बढ़िया। A peculiar thing about tsunamis is that when they reach shallow waters, they slow down and their height increases. Also, when tsunamis happen, a weird effect called a drawback can happen, which is when the ocean water suddenly pulls back from the shore, exposing the seafloor that is usually underwater. This can be dangerous for people who don't know about it, since they sometimes remain near the shore to satisfy their curiosity or to collect fish from the exposed seabed. हाँ, सही है। वाकई में ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते। वो तो ये बोलते ओ समझे कि बड़ी लहर, लेकिन कहाँ से पैदा होती है, कैसे होती है, कारण क्या है, इसके बिल्कुल खुल के बता रहे हैं। और अपनी समझे वो तो बड़ी लहर आ गई, सुनामी आ गई, वैसा नहीं है। In Japan, ancient tsunami stones have been placed by previous generations to mark the highest points reached by tsunamis. These stones serve as warnings to future generations to avoid building homes below these points. The 2004 Indian Ocean tsunami was among the deadliest natural disasters in human history, with at least 230,000 people killed or missing in 14 countries. ये वही सुनामी जो तूने देखा होगा, तूने कभी सुना है अपने साउथ इंडिया में आई थी तो सुनामी यही वो सुनामी का बहुत भयंकर मंजर रहता है। Drought. A drought is a period of drier than normal conditions that can last for days, months, or years. They are more likely to happen in the tropics because of their annual dry seasons. And when they do happen, वो देखो आगे नक्शे में अपना भारत ये they increase the likelihood of wildfires, while heat waves can significantly worsen drought conditions. The problems caused by droughts range from a lack of water supplies for drinking and irrigation to mass migrations caused by famines. One of the most severe droughts in U.S. history was the Dust Bowl in 1930. It affected the Great Plains, causing massive dust storms and displacing thousands of families. If you want to discuss this video or suggest an idea for the next one, join my Discord. Link in the description. वाह भैया ये यहाँ पर बिल्कुल जो जानकारी मिल रही है भैया, इससे जो हाँ मैं तो ये को अपन अभी तो तक एक अंधेरी गुफा में से कोई उजाले में लाने वाला तो था नहीं, ये उजाले में नहीं निकल गया। एक एक चीज़ का कि सुनामी कैसे आई, तूफान कैसे आए, बमंडल कैसे उठे, उसके कारण क्या, एक एक चीज़ को इतने अच्छे तरीके उनकी गति, उनका समय और उनका होने का कारण, अरे क्या बेहतरीन तरीके से बताया कि एक कागज में एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को पढ़ा दिया है। अपने को तो मालूम था कि इतने तरह के तूफान, इतने तरह की सुनामी आती है। हाँ, पहली बार जानने का मौका लगा वीडियो के माध्यम से। वाकई में बिल्कुल सही साठ वाली जानकारी दी है। यार देखो ये वो जो भूकंप से की चीज़ है, वो तो क्या एक कुदरती आपदा है, उसको तो कहीं से करते कोई लोग नहीं देखता है। सही। लेकिन कुछ आपदाएं ऐसी भी है कि जो अपनी गलती के कारण है या अपनी नासमझी की वजह लापरवाही भी रहती है, उसको अपन सोचते हैं। अगर अपन वहाँ पर सावधानी बरते और वो चीज़ को रोकने की कोशिश करें तो वो चीज़ आप फिर आपने तो कोशिश पूरी आपको उसका हो तो फिर उसका आगे भी नहीं कर सकते। अच्छा अब जैसे कि वो बाढ़, जहाँ तक मैं समझता हूँ उसको आने में इंसान की सबसे बड़ा हाथ, क्यों, एक तो नदी का आसपास अगर कोई बिल्डिंग बना के बेटा, अरे भाई उससे दूर बनाओ नहीं, उसको जगह तो जिस पानी झगड़ा होगा तो ताकत तो उसके वजह, अब वो ताकत तो मुझे फैलेगा तो फिर नुकसान तो होना, इसलिए मकान उससे मुझे बनाओ और उसको जगह दो, तो ये चीज आने नहीं। सही बात बाबू, ये मेन बात तो बोले नहीं आपने। हाँ। जैसे बारिश का समय आने वाला है, नालियों की सफाई हुई नहीं। हाँ। तो पानी बाहर आएगा ही, नदी की साफ सफाई नहीं, उसका छोड़ीकरण नहीं हुआ। हाँ। तो फिर बाढ़ आने के कारण बनेंगे कि उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी। अब देख लो अपने बम्बई में कितनी बार सुनते हैं बाढ़ आ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब वो कई बार वो नगर निगम साफ सफाई करती है नालों की, वो बाढ़ तो आना ही सीधी सी बात है, कचरा बसेगा तो ऊपर पानी आना ही। अच्छा फिर समंदर पास में ही। अच्छा फिर समुद्र का शहर है वो, तो आप सबसे पहले ट्रेन पे हो जाए तो वो पानी नहीं भरा
तो फिर बाहर नहीं आए। अब सफाई होती नहीं है, मौसम बदला तो फिर वो पानी जल जाएगा तो जाएगा बाहर बन के फिर अपने को नुकसान देगा ही देगा। सही। यार जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लगभग जितनी भी आपदा है, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो ज्वालामुखी हो, चाहे वो भूस्खलन हो, जितनी भी आपदा है अपन जो देखी उसमें कोई छूटी नहीं है। सही बात। और उसके कारण बिल्कुल साफ साफ उन्होंने हर तरह की आपदाएं देख रही हैं। कि ये कैसे होती है, ये कैसे होती है, इससे बचने के लिए क्या करना और चाहिए। इससे करनी। सही। बिल्कुल सही बात है। बाकी बहुत अच्छी वीडियो है। वाकई में वो ज्ञानवर्धक और जानकारी वाली वीडियो, इतनी आपदाओं के बारे में पता चला है कि दूसरों को भी बता सकते हैं। हाँ। ऐसी जानकारी हाथ लग गई। वो पहली बार मालूम पड़ा है कि ऐसी आपदाएं भी आती हैं दुनिया भर में। वाकई में वो बहुत ही शानदार वीडियो लगी, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो लगी। और ऐसी ही जानकारी और भरोसे बन वाली वीडियो से आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।